फुरकान, या तो मीडिएटर का रोल प्ले कर लो या ये मत करो। मैं हार्ट टू हार्ट नहीं जाती। मतलब तुम सीरियस तो हो ना, तुम इस मामले में भी सीरियस नहीं हो, तुम कर रहे हो। और तुम पता क्या करो, तुम ना तुम क्या इतना तैयार हो क्या है वैसे? इसकी नानू आई है। भैया ये आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। Hi everyone, another day, another long drive to the office. At this point I am just numb. मुझे ऐसा लगता है मैं आधी गाड़ी चलाते हुए बीच में सो जाती हूँ क्योंकि इतनी लंबी ड्राइव होती है ना। I have to do something to keep myself awake. और ऊपर से these are winter mornings, तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ही नींद आ रही होती है। I am just about to reach office and it's extremely cold in Islamabad. नहीं। कितने कप चाय? So a little bit of context before starting this video. What exactly happened that I have a friend who was working at TCM with me. She left और उसके जाने पे एक ना बहुत weird सी miscommunication हो गई, for which she and I stopped talking. Like हमने लड़ाई भी नहीं की but we just stopped talking to each other. So Furqan is my friend, you all know him by now from my stories. He tried to play a mediator role in between बहुत दफ़ा but it just couldn't happen. So one day हम दोनों ऑफिस में बैठे हुए थे and we decided कि let's go pick her up from her house. किसी बाहर नज़दीक रेस्टोरेंट में बैठते हैं और चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं. And that's when we went outside her home. हम बाहर जाके करीब में किसी रेस्टोरेंट में बैठे. One big thing for me in this that I actually confronted someone and tried to resolve things out. क्योंकि usually ये मैं बिल्कुल भी नहीं करती and I think it's the same for her. कुंडी लगा रही है हंसों से। या तो मीडिएटर का रोल प्ले कर लो या ये मत करो। मैं हार्ट टू हार्ट नहीं जाती। मतलब तुम सीरियस तो हो ना, तुम इस मामले में भी सीरियस नहीं हो, तुम कर रहे हो। The next day. It's another day and I'm just so badly stuck in traffic. I decided to come from another route to save myself from the traffic of one road, but I landed into another. और बुरा हाल है इस टाइम ट्रैफिक का and I have to get to a meeting in like 15 minutes. और मेरा रास्ता भी हार्डली सिर्फ 15 मिनट्स का ही रह गया, बट अगर ट्रैफिक कैसे चलेगी तो I won't be able to reach. Today was supposed to be work from home, but I am going for a meeting. I hate the days when my work from home is disturbed. Honestly, I hate it. मतलब मैं चाहती हूँ कि 2 दिन सुकून के मिलते हैं एटलीस्ट, वो तो मैं घर से काम कर लूँ, but I just hate it. बट मजबूरी है, क्या करें? We all have bills to pay. गाड़ी चलाते हुए ना when there is too much traffic, at one point I feel कि मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेक भी ख़त्म हो गई है बेचारी लग के, और मेरा बस पैर अब ब्रेक पे बैठ ही नहीं रहा. and most of the times I just sleep through driving. पता नहीं नींद आ जाती है and it's so horrible. और मेरा रास्ता यूजली ही इतना ज़्यादा लंबा होता है और मुझे ऑनेस्टली हर टाइम इतना डर लग रहा होता है कि मैं कहीं या तो either I'll sleep in the middle या कुछ अल्लाह ना करे मैं खुद ही कुछ बुरा कर दूँगी, अल्लाह ना करे प्लीज़. But yeah, this traffic is just getting on my nerves day by day. Guys, new guy is here. Hello. ये क्या है? कैसे हैं आप सब? तो कैसे हैं आप सब? तो कैसे हैं आप? दोबारा स्टार्ट करें? Start? नहीं दोबारा स्टार्ट. अच्छा दोबारा. नहीं दोबारा. तो कैसे हैं आप सब? Guys, these are my friends who cancelled go-karting, and I'm sitting here at Burning Brownie with these friends who cancelled. मैंने नहीं कैंसिल किया. मैंने भी नहीं किया. किसने किया? बट हम कल जाएंगे दोबारा. इसने एक चीज़ बताई नहीं है, इसकी ना 3 ज़बानें हैं, ठीक है?
ये हर ज़ुबान से One, two, three. एक बात करती है, ठीक है, और फिर बाद में कहती है कि मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने तो ये कहा था. I'm honest and no lie. तुम पता क्या करो, तुम ना बोलो गाइस, ये इजी बाइक ये चलाने इसमें जो आए अभी वीडियो हैं बनाई है ना, बॉयज. हाँ, तुम भी वैसे ही वीडियो बना लो, स्लो-मो शॉट, ठीक है. तुम क्या इतना तैयार हो क्या है वैसे? इसकी नानू आई है. बीते उम्र सारी उम्र रात भर 2000 years later. For 1 hour we have finally unlocked. उसी गई इन्होंने. आराम से, आराम से. बताइए ये क्या जगह है? ये भैया ये आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है. मैं थक गई. चलो बस. Now I'm gonna go on this one. We went out to took bread for Hajar's mummy. Isn't your princess? जी. आओ वो तो आप है ना, मूड भी दिखा रही है पैसेंजर प्रिंसेस वाली. Hi guys, so this was it from this week's vlog. It was not much happening for me because my weeks are usually very fulfilled. Today we had our annual lunch at office, not at office but it was from office. So after that we went for chai and nothing much happened, so I couldn't get a time to record the lunch because there was so much happening, plus the area was super cold. My hands were almost frozen, so we didn't get a chance to record anything. So I just went for chai and then I just came back. I'm just going to remove my makeup, chill in my bed and going to think what I'm going to do on New Year's. So there were like 2 plans that are now cancelled for New Year. So ab jo bhi hoga, it's going to be a very last minute plan. So I'm just going to end the vlog here. So thank you for sticking in and for joining me for the whole week. Next week is probably going to be a new year, hopefully. I think we have passed the stage where we talk about New Year resolutions. I hope so, because the resolutions have died, the hope has died. So yeah, so thank you for sticking in and see you in the next vlog.